Hey guys, this is Sal and welcome to this exclusive episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind सेशन में आपका स्वागत है एंड इस पर्टिकुलर वीकली मास्टरमाइंड सेशन में हम वही सब देखने वाले हैं जो कि हम हर वीकली मास्टरमाइंड सेशन में देखते आ रहे हैं, बट दिस इज लाइक एन अपडेटेड वर्जन बिकॉज इस पर्टिकुलर वीकली मास्टरमाइंड में लाइक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीकली मास्टरमाइंड ऑनवर्ड्स हम लोग हिंदी प्लस इंग्लिश में बात करेंगे. सो मेक श्योर यू आर पेइंग फुल अटेंशन और साथ ही साथ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीकली मास्टरमाइंड सेशन मैं आपको अपडेट्स भी देता रहूंगा बिकॉज कल का जो वीडियो था दैट वाज स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन लाइक दिवाली पिक्स और उन सब पिक्स का जो है मैंने बताया था 3 स्टॉक दैट वाज डीएलएफ एनटीपीसी एंड एनएमडीसी. ये 3 स्टॉक्स का फॉलोअप भी मैं इसी पर्टिकुलर सीरीज जो कि है वीकली मास्टरमाइंड सीरीज इसी में देता रहूंगा. तो मेक श्योर you keep watching weekly mastermind series, and first of all wishing you all a very happy Diwali once again, and I hope that your Diwali is also going good and you're having a lot of joy, happiness, peace, prosperity, and most importantly good health and wealth and good relationship into your life. And let's begin with what we have so far for this particular weekly mastermind. So weekly mastermind for 12th of November 2023, जिसमें first of all we are going to look up at पहले हम देखेंगे मार्केट इंडेक्स, देन वी आर गोइंग टू जंप टू व्हाट आर द आउटपरफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स, व्हाट आर द वीकली गेनर्स एंड लूजर्स जो निफ्टी 50 से हम देखते आ रहे हैं. देन सम ऑफ द ट्रेंडिंग स्टॉक जो कि सिस्टम 5 के बेसिस पे है और सम ऑफ द ट्रैकिंग स्टॉक जो कि सिस्टम 3 के बेसिस पे है. एंड इवन yesterday आई मेंशन्ड अबाउट हाउ यू कैन गेट स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री, और उसके बेसिस पे आज मैं एक और फॉलो अप भी देने वाला हूँ सो दैट यू कैन एक्चुअली गेट मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ इट. एंड देन कम्स एट द एंड जो कि हम कप पैटर्न स्टॉक डिस्कस करते आ रहे हैं. And at the end, I'm also going to give you some more cup pattern stocks which you can track and trade. So first of all, we have market index. जिसमें Nifty 50 is having percentage like a percentage move देखें so it is up by 1%. Then we have Sensex which is up by 0.84. बैंक निफ्टी ने काफी बेहतर you can consider काफी बेहतर momentum दिया है as compared to Nifty 50 which is up by 1.15, and mid cap 50 even outperforming as compared to बैंक निफ्टी जिसने मोमेंटम दिया है 2.67% ऑन द अपसाइड, और इंडिया विक्स इज स्टेबल 2.11 एंड यूएसडी आईएनआर इज आल्सो स्टेबल दैट इज 0.06%. तो एज ऑफ नाउ मार्केट पैनिक मोड से कंप्लीटली बाहर है एंड इवन 2 वीक से मैं ये मेंशन करते आ रहा हूँ कि यहाँ से बेस फॉर्म हो सकता है एंड डेफिनेटली वही बेस फॉर्म हुआ है. एंड राइट नाउ वी कैन एक्सपेक्ट फॉर द मोमेंटम ऑन द अपर साइड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चार्ट पे ध्यान दें तो वी हैव निफ्टी 50 जिसमें मैंने कल के वीडियो में जो कि दिवाली पिक्स वाला था उसी में मैंने मेंशन किया था कि इसने प्रॉपर 60 सपोर्ट लिया है जहां पे इट इज मेंशनिंग आई एम वेरी बुलिश. वीकली टाइम फ्रेम में फिलहाल साइडवेज जोन में है एंड डेली टाइम फ्रेम इज आल्सो बिटवीन 40-60. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आफ्टर दिवाली जो कि नवंबर मंथ में जो जो भी वीक्स आने वाले हैं बिकॉज अब तक 1.5 वीक्स हो चुका है नवंबर का, बट आने वाले 2-3 हफ्तों में वी कैन डेफिनेटली सी फर्दरमोर ग्रोथ ऑन द पॉजिटिव साइड. और जो भी अपर रेजिस्टेंसेस हैं जो कि लाइक 19,750 ऑलमोस्ट अराउंड दैट जोन, जो भी रेजिस्टेंसेस हैं डेफिनेटली वी कैन ब्रेक आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंसेस एज वेल, वी कैन सी दैट पर्टिकुलर मूव. देन कम्स बैंक निफ्टी चार्ट जिसमें मंथली थोड़ा सा 60 से नीचे था बट राइट नाउ इट इज सस्टेनिंग अबव 60. वीकली टाइम फ्रेम में बिटवीन 40-60, तो मीडियम टर्म ट्रेंड इज लुकिंग कंसोलिडेटेड एज ऑफ नाउ and trying to pull back on the upper side. और डेली टाइम फ्रेम पे भी उसका फेस, इफ यू लुक अप एट द फेस ऑफ आरएसआई, तो वो ऊपर के साइड है विच मींस इट इज आल्सो डिपिक्टिंग आई एम बुलिश एंड इट हैज आल्सो ब्रेकन आउट ऑफ मूविंग एवरेज जो कि काफी बेटर साइन है एज कंपेयर टू निफ्टी 50. एंड देन कम सेक्टर स्पेसिफिक मूव. तो आईटी और मीडिया यही दो सेक्टर्स हैं जो कि ऑन द डाउन साइड, इवन दो इफ यू लुक अप एट आईटी सेक्टर इट वाज नॉट दैट बैड, like kind of flattish था, and even media was also slightly down that is 1.51%. Otherwise अगर हम दूसरे sectors पे देखें that is pharma which is up by 4.26, then we have metal up by 2.57, infra which is up by 2.17, realty up by 2.85. तो ये हैं some of the best performing sectors, and even I'm mentioning more of infra and realty sector जिसपे हम फोकस कर सकते हैं. इवन इफ वी वांट टू फोकस ऑन निफ्टी लाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वी कैन स्पेसिफिकली गो फॉर PSU banks जो कि फिलहाल you can consider those are in very good momentum. And if we look up at charts, so Nifty IT तीनों टाइम फ्रेम्स बिटवीन 40-60, तो एज ऑफ नाउ वी कैन अवॉइड. एंड इवन मैंने फ्यू मंथ्स बैक, नॉट फ्यू वीक्स बैक, फ्यू मंथ्स बैक मैंने ये भी पर्सपेक्टिव बताया था कि जब तीनों टाइम फ्रेम्स बिटवीन 40-60 और बेस पे हैं तो वी कैन गो फॉर वैल्यू बैंक जहां पे हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं फॉर 2 to 3 years, दैट इज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. एंड सिमिलर इज व्हाट वी आर एबल टू सी राइट नाउ ऑन निफ्टी आईटी. बीच में मोमेंटम बेस हो चुका था बट अभी फिर से वैल्यू बाइंग बेस हो चुका है, तो वी हैव टू शिफ्ट आवर गेस फ्रॉम बीइंग इनटू मोमेंटम ट्रेडिंग to being into value investing and all. Then comes Nifty Auto monthly above 60, weekly above 60, above moving average, और daily फिलहाल sideways में है. Once it breaks out तो we can see all time high zone as well.
देन कम्स निफ्टी मेटल, मंथली फिलहाल 60 पे अटक रहा है, ट्रिपल टॉप बन चुका है। वीकली इज ऑल्सो बिटवीन 40-60 एंड डेली इज ऑल्सो बिटवीन 40-60, तो वी कैन जस्ट कीप दिस ऑन ट्रैक फिलहाल के लिए। मेटल सेक्टर इज नॉट दैट वेरी गुड। देन कम्स निफ्टी एफएमसीजी, मंथली अबाउट 60, वीकली एमर्जिंग आउट टू ब्रेकआउट ऑफ 60, और डेली तो कंप्लीटली बिटवीन 40-60 है। तो फिलहाल के लिए जब तक वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है, we can't take further action. And one notice, like one suggestion which I would like to give here, and this would be like a quick disclaimer, जो कि अगर यू कैन सी राइट नाउ कि ओवरऑल मार्केट का पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का जो है, जो कि मंथली टाइम फ्रेम, दैट इज बुलिश। तो इस टाइम पे इफ वी गो फॉर शॉर्ट दैट इज ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो हमें शॉर्ट में वेरी क्विक होना पड़ेगा, या फिर वी कैन कंप्लीटली अवॉइड शॉर्ट एज वेल। सो दिस वुड बी माय सजेशन। देन कम्स निफ्टी एनर्जी, मंथली पे फिर अटका हुआ है, वीकली पे इट इज ब्रेकिंग आउट, एंड डेली पे भी उसने ब्रेकआउट दिया है, बट स्टिल प्रॉपर कंफर्मेशन लगेगा सो दैट इट कैन डेफिनेटली ब्रेक आउट ऑफ 60 एंड गिव फॉर द मोर मोमेंटम। देन कम्स निफ्टी फार्मा, मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, लाइक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है जिसमें उसने प्रॉपर मूविंग एवरेज सपोर्ट भी लिया है, विच इज अ गुड साइन। और डेली टाइम फ्रेम पे भी उसने 60 ब्रेकआउट दिया, विच इज अ वेरी गुड साइन। सो फार्मा सेक्टर कैन ऑल्सो बी और ट्रैक्ड इन अपकमिंग वीक। देन वी हैव निफ्टी इंफ्रा, जो कि इंफ्रा की हम बात कर रहे हैं, वी हैव मंथली अबाउट 60, वीकली ऑल्सो अबाउट 60, जिसने प्रॉपर वी शेप रिकवरी दिया है ऑन वीकली टाइम फ्रेम एंड इवन ऑन डेली टाइम फ्रेम। एज यू कैन सी, शार्प वी शेप रिकवरी और डेली ब्रेकआउट के आसपास है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ब्रेकआउट भी दे सकता है या फिर वो रेजिस्ट भी कर सकता है। तो वी हैव टू कीप अ ट्रैक, जब 60 ब्रेकआउट करेगा देन वी कैन डेफिनेटली गो फॉर इंफ्रा स्टॉक्स एज वेल। Then we have Nifty Realty, monthly, weekly, daily, all are above 60, and even that is why I mentioned about DLF in our Diwali picks, because DLF is also from realty sector, and some more sectors, some more stocks are like Godrej Properties, Oberoi Realty, and few more stocks which are involved in realty sector, and definitely this can be the hottest sector for next few weeks and maybe till the end of this year, जब तक वो consolidation में नहीं आता है। Then comes Nifty Media, monthly between 40-60, weekly also same confirmation, daily is also having same confirmation। वीकली पे 60 पे अटक चुका है, इट इज मेंशनिंग फ्रॉम बीइंग बुलिश टू नॉट सो बुलिश। तो फिलहाल के लिए मीडिया सेक्टर कंप्लीटली अवॉइड। देन वी हैव वीकली बेस्ट परफॉर्मर्स, जो कि हम देखते आ रहे हैं फ्रॉम निफ्टी 50, वी हैव यस बैंक व्हिच इज अप बाय 11.25%, वी हैव बीपीसीएल अप बाय 6.24, देन वी हैव वीडीएल एलटी, देन वी हैव एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, एमएनएम। तो फिलहाल मिक्स्ड मैच है, कोई फिक्स सेक्टर नहीं है। देन वी हैव वीकली वर्स्ट परफॉर्मर्स, जिसमें जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड व्हिच इज डाउन बाय 9.57, यही है स्टॉक विच इज वीकेस्ट परफॉर्मिंग। देन वी हैव इन्फोसिस डाउन बाय 1.45, इतना कुछ खास मोमेंटम नहीं है डाउन साइड में। देन वी हैव विप्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचसीएल टेक, यूपीएल एंड टाइटन, so kind of flattish on the downside, but still these are some of the weakest performing stocks from Nifty 50 from last 1 week. And now let's have a look at some of the trend following stocks, जिसमें monthly, weekly, daily all the time frames are already above 60, जिसमें पहला है पीएफसी, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टॉक जो मैंने आई थिंक 3 से 4 महीने पहले आई हैव मेंशन्ड दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन वीकली मास्टरमाइंड सेशन, जिसमें मैंने कप पैटर्न स्टॉक पे मेंशन किया था, एंड राइट नाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज अगेन गिविंग गुड मोमेंटम, सो दिस इज लाइक अ वेरी क्रेजी मूव। देन कम्स एनएमडीसी, यही सेम स्टॉक है जो कि मैंने इसमें बताया है, दिवाली पिक्स में भी बताया है। सो इफ यू वांट टू डू द इफ यू वांट टू सी द ओवरऑल एनालिसिस, यू कैन डेफिनेटली वॉच आर दिवाली स्पेशल पिक जो मैंने मेंशन किया, एंड इवन बिलो दिस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डेफिनेटली लगा दूंगा, सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। देन वी हैव औरो फार्मा, मंथली, वीकली, डेली ऑल आर अबाउट 60, और डेली पे वॉल्यूम इज आल्सो वेरी गुड, जो कि वेरी यू कैन कंसिडर, जो कि काफी गुड साइन है, एंड इवन इट हैज टेकन प्रॉपर मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड आरएसआई 60 सपोर्ट एज वेल, सो इट्स मेंशनिंग आई एम वेरी बुलिश। तो फार्मा सेक्टर परफॉर्मिंग गुड। देन वी हैव आरईसी, जो कि मैंने बताया था, पीएफसी आरईसी दोनों भाई भाई। So PFC is also performing, REC is also performing good, so that's a very good sign. Then we have JK Cement from infra sector, monthly above 60, weekly पे 60 breakout देने वाला है, because volume is also very good, so definitely we can track this particular stock as well. और daily पे after a gap up, it is already sustaining above 60, so with a very low risk, high reward opportunity, we can definitely trade into this particular stock. Then comes some of the tracking stocks जो कि हम track कर सकते हैं for upcoming few weeks. First of all, we have NTPC, यही सेम स्टॉक है जो कि मैंने मेंशन किया है, पूरा ओवरऑल टॉप डाउन अप्रोच इन दिवाली पिक्स, मेक श्योर यू चेक दैट आउट। डेली पे 60 ब्रेकआउट करते हैं, वी कैन ट्रेड बेस्ड ऑन सिस्टम 3, एंड मंथली और वीकली तो ऑलरेडी अबाउट 60 है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। देन वी हैव कैनरा बैंक, मंथली, वीकली बोथ आर अबाउट 60, डेली पे थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, एंड इवन दिस इज द सेम स्टॉक जो कि मैंने टेक्निकल सैटरडे सीरीज में एपिसोड नंबर 18 और 19, जो कि था फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची प्रोजेक्शन, दोनों में मैंने यही सेम स्टॉक मेंशन किया है, तो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट एज वेल। देन वी हैव एमएफएसएल, मंथली 60 पे अटक रहा है, वीकली सस्टेनिंग अबाउट 60, डेली पे भी 60 पे अटक रहा है फिलहाल के लिए। तो वंस इट शोज गुड मोमेंटम फिलहाल के लिए, तो वी कैन कीप इट ऑन ट्रैक, बिकॉज स्पिनिंग टॉप भी बना है टॉप पे ही।
तो once it breaks out, तभी हमें proper confirmation मिलेगा. Without any confirmation, we are not gonna trade. And even if we trade, we are gonna trade based on proper low risk high reward opportunity, जिसमें हमारा risk management हमारे control में रहेगा. Because targets are something which we don't know, but risk is something which we completely know. So make sure you are having proper risk management at its place before executing any kind of trade. Then comes Axis Bank, monthly above 60, weekly 60 breakout, और डेली पे भी 60 ब्रेकआउट कर रहे हैं. सो दिस कैन आल्सो बी अ पोटेंशियल ट्रेड फॉर सिस्टम 3. देन कम्स पीएनबी, मंथली वीकली बोथ आर अबव 60, डेली मूविंग एवरेज के ऊपर है एंड अबाउट टू ब्रेकआउट ऑफ 60. वॉल्यूम भी अच्छी है, लाइक ठीक ठाक है इन टर्म्स ऑफ डिमांड साइड. सप्लाई से तो बेहतर है. So definitely we can look this particular stock for system 3 as well. So these are some of the stocks and let's have a look at previous cup pattern stocks जो कि हम weekly mastermind series में कब से चेक करते आ रहे हैं. So first of all we have Murudkera जहाँ पे resolution point was around 58.5 and current market price is around 62.75 जो कि it's above our resolution point which is a very good sign. Then comes NBCC, resolution point was around 68.85 और current market price around 65.70. तो ये स्टॉक भी है, काफी अच्छी मोमेंटम है, बट राइट नाउ इट इज बिलो द resolution point. तो until and unless it is not breaking out, until and unless it is not giving good momentum, it's not gonna make sense. So we can keep this stock on track because volume काफी you can consider काफी amazing है since last few months as compared to last few years, जो कि आप खुद देख सकते हो. Demand is good and green volume is good, which means bulls are in charge. And let's have a look at some of the new pattern stocks for this particular weekly mastermind session. जिसमें first of all we have Markson, जहाँ पे resolution point is around 115 and current market price is around 129.90. और यही सेम स्टॉक है जो कि मैंने पिछले हफ्ते हमारी कम्युनिटी में मेंशन किया था. एंड इवन all the members have actually executed the trade जहाँ पे उनका प्रॉफिट भी चल रहा है. एंड इवन आई एम ऑल्सो हैविंग सम पोजिशंस इनटू द स्टॉक. तो काफी बेहतर मोमेंटम है एंड राइट नाउ वी आर इन द मनी ऑफ द स्टॉक एज वेल. और यहाँ पे भी वी कैन गो टू डेली टाइम फ्रेम जहाँ पे हमें लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं. Then comes Peninsula Land Limited. Sector is from residential and commercial complexes. जहाँ पे resolution point is around 48.95 and current market price is around 42.60. Even हमारी कम्युनिटी में भी इसी स्टॉक को हमने ट्रैक किया है, फिलहाल एग्जीक्यूट नहीं किया बिकॉज resolution point के ऊपर जहाँ पे हमारा एंट्री प्राइस है वो अब तक ट्रिगर नहीं हुआ. तो until and unless it is not triggering, we are not gonna execute the trade and definitely we can keep this particular stock on track. क्योंकि अगर वो breakout दे रहा है तभी हम ट्रेड लेंगे, अगर वो resist कर रहा है then this particular stock will be out. We are not gonna trade into it, right? So this is what we have so far for this particular weekly mastermind session and I hope that you have got immense value and clarity. And मैं आशा करता हूँ कि you are able to understand all the concepts in Hindi plus English and looking forward to see you in upcoming videos. और साथ ही साथ a quick update that below this particular video in the description box मैंने एक link provide किया है which is like a special gift from my side as a Diwali gift for all the viewers, all the YouTube family and for Facebook family as well, जहाँ पे I've given the link to our exclusive course of stock trading secrets which is the most popular course of our community of Zero Achievers Club. I've given the link to that particular course and मैंने description में ही एक coupon code भी mention किया है. The actual value of that particular course is 5,000 rupees inclusive of GST. But as you're watching this particular video, मैंने description में एक अलग से coupon code भी दिया है where you don't have to pay anything, which means this particular Diwali I am gifting you this particular course absolutely for free. और मुझे आपका सिर्फ एक ही you can consider एक ही investment चाहिए and that is your time investment, your energy and your efforts investment. Because when it comes to trading and investing, हम पैसे तो इन्वेस्ट करते हैं in terms of buying or selling stocks and all, in terms of equity futures and options. We do trade money and all, but we don't invest on ourselves. And even right now जो मैंने आपको gift दिया है as a Diwali gift, you don't have to invest money, but you have to definitely invest your time, energy and effort so that आप उस स्किल को मास्टर कर सको एंड यू कैन लर्न अबाउट सिस्टम 3. एंड स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर कोर्स में आई हैव डिफाइंड, मैंने ब्रेक थ्रू किया है, एक एक पॉइंट को ब्रेक डाउन किया है so that you can understand everything about 7-step process, about you can consider about mindset as well as about system 3 as well. वहां पे मैंने example के साथ back testing भी किया है. So make sure you check that out and the link is given in the description whether you're watching it on Facebook or even on YouTube channel as well. And I hope that you are enjoying this particular series and even technical Saturday series as well. And make sure you like this particular video, subscribe to our YouTube channel and make sure प्लीज मेक श्योर यू आर स्टेइंग अपडेटेड एंड स्टेइंग ट्यून्ड बिकॉज हमारा एक पॉडकास्ट शो तो लॉन्च हो चुका है. पॉडकास्ट शो के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड भी लॉन्च हो चुका है. नेक्स्ट वीक हमारा सेकंड एपिसोड भी लॉन्च होगा और साथ ही साथ अगले हफ्ते यानी कि जो नेक्स्ट हफ्ते में यानी कि 21st एपिसोड होगा टेक्निकल सैटरडे सीरीज का. उसके बाद वीकली मास्टरमाइंड और मंडे को
we are gonna have something very special. Make sure you are staying tuned. And the headline is 2023 finish your year strong. Finish your year strong. यही tagline के साथ we are gonna come up with 6-part video series जो कि help करेगा आपकी, so that you can finish this particular year of 2023 with a bang. And even if you're watching this in 2024, 25, or even in 10 years down the line, still you can go through that particular 6-part video series, and you can set goals, set vision, and you can achieve your goals as soon as possible rather than waiting for January and so on. Right. So looking forward to see you in upcoming videos and upcoming new initiatives. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.